So, hi students, in this uh, video we are going to study about the Central Highlands, and Central Highlands are the second subdivisions of the Peninsular Plateau. Uh, we have already studied about the Peninsular Plateau's first subdivision, that is the डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू के बारे में हम पहले से ही इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसको आप दोबारा रिवीजन करने के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उसको दोबारा देख सकते हो, और उसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स। इफ यू pay attention, or if you see the name carefully, Central Highlands, it is made up of the central and highlands. It is known as the central because it lies in the center of the India. If you see this location, see the location here, it is in the center of the in India, and its highlands because it is the land in this area or this landform is high. It's not like a mountain, but it is higher than the other rest of the surrounding area, but it's also not as high as the डेक्कन प्लेटू। अगर डेक्कन प्लेटू का इसको इससे कंपेयर करें तो जो इसका लैंड है वो डेक्कन प्लेटू से थोड़ा सा की हाइट कम है। सो इफ वी सी द एक्सटेंशन, अगर इसका आप एक्सटेंशन देखते हैं तो इन द नॉर्थ वेस्ट और इन द नॉर्थ वेस्ट it is bounded by the Aravalli range, and in the south it is bounded by the सतपुरा रेंज। देखिए यहाँ पे अगर आप साउथ में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सतपुरा रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एक अरावली रेंज है। और इफ यू सी इन द ईस्ट देर आर द राजमहल हिल्स, सो इट इज surrounded by the mountain ranges on the three sides, or in the almost in west also there is the another range, or in the center also. Now let's discuss about the elevation, its height। अगर हम इसके हाइट के बारे में बात करते हैं तो इसकी हाइट है वो है 600 to 900 meters। अगर if you remember the Deccan Plateau's height, or the average elevation of the Deccan Plateau, that was 1500 meters. So Deccan Plateau is higher than this, or we can say that the elevation of the पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू तीनों पार्ट है। तो जो पूरे के पूरे अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, पूरे के यहाँ से ये पूरे के, तो वह साउथ से नॉर्थ की तरफ जो हाइट है वो डिक्रीज होती है। इन द साउथ इट इज हायर देन द एलिवेशन डिक्रीजेस as we move towards the north। तो इसका जो एवरेज हाइट है वह 600 to 900 meters। एंड if we see the these Satpura ranges, so Satpura ranges, here we are talking about the Satpura ranges। So and Satpura range is the example of the one of the oldest mountain range which is हाईली डिनोडेड मतलब ऊपर से कट गई है, ऊपर का सरफेस है वो पूरा हट चुका है, वो जो पूरी तरह से उसके सरफेस हट चुका है। और एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द जो सतपुरा रेंज है वह सतपुरा जो रेंज है माउंटेन रेंज वह जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका नॉर्थ मोस्टर्न बाउंड्री है। मतलब सतपुरा रेंज के नॉर्थ के अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाते हैं और साउथ के अंदर डेक्कन प्लेट्यू आ जाती हैं। तो सो सतपुरा रेंजेज इज द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। If we go next, then if we see the extension of peninsular plateau can be seen as the
as far as the Jaisalmer in the west, because these highland central highlands are also the part of the peninsular plateau. तो जहाँ तक central highlands का extension है वहाँ तक peninsular plateau का भी extension है. तो अगर इसके हम अगर और भी ज्यादा, जैसा कि अभी हमने देखा था अरावली रेंज तक, लेकिन अरावली रेंज के आगे भी जैसलमेर तक है, क्योंकि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, दीज कम्स इन द डेजर्ट एरिया और द इंडियन डेजर्ट. लेकिन जो इसका अगर हम वहाँ पे नीचे खुदाई करके देखा जाए तो वहाँ पर भी सेंट्रल हाईलैंड्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू का extension है. But in that area this is covered by the sand, और जो डेजर्ट की सैंड है उससे जो सैंड ये पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ पर ढक चुका है. लेकिन अगर उसकी गहराई में नीचे देखें तो वहाँ पे सेंट्रल जो प्लेट्यू का ही फॉर्मेशन है. वहाँ पे भी जो इसके नीचे की जो रॉक्स हैं दोज आर सेम एज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, but those are covered by the sand ridges and crescent shaped sand dunes. Those are called as the bar chans. एंड दिस रीजन, और हम अगर सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अगर इसके जो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन, अगर इसकी ये कब से बना है, कब तक बना हुआ है, तो सो दिस रीजन हैज अंडरगोन द मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन its geological history which can be corroborated by the presence of the metamorphic rocks such as marble, slates, gneiss and etc. So because this the process of this means the formation of this has gone undergone the metamorphic process in its geological history. अगर इसके geological history, जो इसका बनने की जो हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये जियोलॉजिकल मेटामॉर्फिक प्रोसेस के द्वारा, मेटामॉर्फिक प्रोसेस होती है जब जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो डिफरेंट प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ के थ्रू गया, तो प्रोसेस, और इसको हम इसको किससे हम साबित कर सकते हैं? इट कैन बी वेरीफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जस्ट लाइक द मार्बल. जो इस एरिया के अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आपको मार्बल हैं, स्लेट्स हैं, स्लेट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द रॉक, एंड द निसीज एंड विच आर जस्ट लाइक द ग्रेनाइट. सो दिस एरिया हैज गॉन अंडरगोन द मेटामॉर्फिक प्रोसेस, और इसी की वजह से इसके अंदर मार्बल, स्लेट और निसिस टाइप्स के रॉक्स मिलते हैं. द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, अगर ओवरऑल इसके हाइट के बारे में बात करें, जो पूरे हाईलैंड्स के, भी पिछला हमने सतपुरा रेंज की देखी थी, दैट वाज द 600 to 900, बट इफ वी सी द एवरेज हाइट ऑफ द कंप्लीट सेंट्रल हाईलैंड्स, it is 700 to 1000 meters. The average height of the central highland is 700 to 1000 meters above the mean sea level, and it slopes towards the north and the north eastern directions. And अगर इसके जो हाइट्स के बारे में देखेंगे किधर से किधर की तरफ जाता है, तो सो its average height is 700 to 1000, and its slopes is from south to north, मतलब it's higher in the south and lower in the नॉर्थ. जो इसका जो फ्लो है जो साउथ में ज़्यादा ऊंचा है और नॉर्थ में कम ऊंचा है. सेम वैसे ही इन द ईस्टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट इट्स स्लोप्स डिक्रीजेस. And if we see about its drainage systems and the rivers, the main rivers of this area, Banas, Chambal, Yamuna, these are the major rivers of this area. Here you can see, here is the Chambal, this is the Chambal, then Yamuna. This flows from south to
north, and the Banas is the only significant tributary of the river Chambal that originates from the Aravalli in the west. The main or the major river which originates from the Aravalli hills, that is the Banas only, or we can say that only Banas is the main river or the one of the significant river which originates from the Aravalli hills, and Banas is the tributary of the Chambal river. Most of the tributaries of the Yamuna, and if you see the tributaries of Yamuna, those originates in the Vindhya and the Kemur ranges. The Vindhya and the Kemur ranges. Vindhya, and here is the Vindhya range, and nearby there is the Kemur range also. These are in the center of this area. So the most of the tributaries of Yamuna originates from the Vindhya river or Vindhya range and the Kemur range, and the Banas, which is the tributary of the Chambal, it originates from the this area, Aravalli range. एन ईस्टर्न एक्सटेंशन, और अगर इसके बारे में हम देखें ईस्टर्न की तरफ, या ईस्टर्न इन दिस एरिया, what its extension in east Central Highland is formed by the राजमहल हिल्स. जो ईस्टर्न की तरफ देखे तो, जो ईस्ट में देखे तो, जो इसका जो एक्सटेंशन है या जो इसकी जो बाउंड्री है, दैट इज मेड बाय द राजमहल हिल्स. टू द साउथ of which lies the large reservoir of mineral resources in the Chota Nagpur plateau. And in this area, here in this area, this is the here are the Rajmahal Hills, and to the south of the Rajmahal Hills in this area, it is the reservoir or the reserve of the very large amount of the मिनरल्स आर फाउंड इन दिस. अगर इसी में जैसे आपने देखा हो जमशेदपुर जो कि स्टील के लिए फेमस है, तो वह इस छोटा नागपुर एरिया के अंदर ही आता है, बिकॉज दिस एरिया इज रिच इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स.